Hello everyone, today we are going to start National Mental Health Program NMHP। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में जो हमारे यूनिट 3 का टॉपिक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। The Government of India launched the National Mental Health Program in 1982। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को 1982 में लॉन्च किया था। Keeping in view the heavy burden of mental illness in the community and inadequate of mental health care infrastructure in the country to deal with it। जो हैवी बर्डन है हमारे इंडिया में मेंटल इलनेस को लेके, और एक जो ये बर्डन है मेंटल इलनेस का वो हमारी कम्युनिटी पे टाइम टू टाइम बना हुआ है। जो इनएडिक्वेट मेंटल हेल्थ है उसको किस तरीके से हमें केयर करनी है, उसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए हमारी कंट्री में, ये जो प्रोग्राम है वो इसे डील करता है। अब बात करते हैं हम डेफिनेशन की। तो अकॉर्डिंग टू WHO मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन अलग होगा और मेंटल इलनेस का डेफिनेशन अलग होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन के बारे में। अकॉर्डिंग टू WHO, मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइज his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively, and is able to make a contribution to his or her community। मेंटल हेल्थ क्या होती है? मेंटल हेल्थ एक ऐसी स्टेट है हमारे वेलबींग की जो इंडिविजुअली हर पर्सन की अपनी खुद की एबिलिटीज़ पे डिपेंड करती है कि जो भी उसकी स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ है वो नॉर्मल नहीं है, यदि नॉर्मल से एबनॉर्मल हो गई, या नॉर्मल है तो उसका मेंटल हेल्थ अच्छा है, यदि एबनॉर्मल है तो मेंटल हेल्थ बुरा है। कैन वर्क प्रोडक्टिवली, जो भी वो काम करता है वो प्रोडक्टिवली करे, और जो भी कंट्रीब्यूशन करना है उसे उसकी कम्युनिटी में वो भी अच्छे से कर सके, तो वो होगी उसकी मेंटल हेल्थ। मेंटल इलनेस, a mental illness is a medical condition that disturbs person's thinking, feeling, mood, ability to release to others and daily functioning। जो मेंटल इलनेस है, यदि मेंटल इलनेस हो गई है, यदि हमारा मेंटल हेल्थ ख़राब हो गया है, तो उसको हम कहेंगे मेडिकल कंडीशन में कि उस पर्सन की जो मेंटल थिंकिंग है, जो उसकी सोचने की क्षमता है वो डिस्टर्ब हो गई है, या उसकी फीलिंग्स ख़राब हो गई है, सैड हो गया है, मूड ख़राब हो गया है, एबिलिटी जो थी उसकी कुछ अच्छा काम करने की वो ख़राब हो गई है। टू रिलीज टू अदर एंड डेली फंक्शनिंग, जो भी उसका डेली फंक्शन रूटीन था वो ख़राब हो गया है। Mental illness are medical conditions that often result in diminished capacity for coping with the ordinary demands of life. Magnitude of the problems. In India, studies during the last 2 decades have shown that about 2 to 3% of population suffer from seriously incapacitating mental disorder of epilepsy। हमारे इंडिया में ड्यूरिंग लास्ट 2 डिकेड्स हमने स्टडी की तो हमने पाया कि 2 से 3% ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है जो सफ़र कर रही है सीरियस कैपेसिटिंग मेंटल डिसऑर्डर ऑफ एपिलेप्सी से। मतलब जो भी मेंटल डिसऑर्डर है लाइक एपिलेप्सी, उससे वो उसे सफ़र कर रही है। अबाउट 10 to 15% ऑफ द पॉपुलेशन सफ़र फ्रॉम अदर ऑफ इमोशनल डिसऑर्डर इन फिजिकल डिसऑर्डर की वजह से वो कुछ इमोशनल डिसऑर्डर से भी सफ़र कर रही है हमारी इंडिया की 10 to 15% ऑफ पॉपुलेशन। अब बात करते हैं हम एम ऑफ NMHP नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स की क्या क्या एम्स होंगे। सबसे पहला एम है प्रिवेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड देयर एसोसिएटेड डिसेबिलिटी। सेकेंड वन इज दैट use of mental health technology to improve general health services. Third one is that application of mental health principles in total national development to improve quality of life. Now, objectives of national mental health programs: to provide mental health care facility to every class of specified population and specifically to those who need of it. Use the knowledge of mental health in the care of the general health and social development. To
increase the community participation in the development of mental health services and encourage the efforts towards self-help in the community. To select essential elements for mental health care, to distribute all the available resources of mental health services on equal basis. Now, component. Training programs of all the workers in the mental health team at the identified nodal institute in the state. Education of the public regarding the mental health to increase the awareness for early detection and treatment. Outpatient services and inpatient services are provided, providing the valuable data and experience at the level of community to the state and center for the future planning, improvement in services and research. The team of workers at the district under the program of A. Psychiatrist, clinical physiologist, psychiatric social worker, community nurses, program manager, case registry assistant and record keeper. Level of NMHP National Mental Health Program. 3 program include 3 sub-program. First one is that treatment sub-prog, village level, primary health level, and third one is that at district level. Second one, rehabilitation sub-program, prevention sub-program. Organization. Tertiary care institutions, mental hospital, supportive organization. वार्निंग साइंस ऑफ मेंटली इल पर्सन, जो भी वार्निंग साइंस होंगे फॉर द मेंटल इल पर्सन उनके लिए होंगे इन यंग चिल्ड्रन. यदि चिल्ड्रन यंग है तो उनके लिए क्या क्या साइंस हो सकते हैं. सबसे पहला, चेंजेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, की स्कूल परफॉर्मेंस चेंजेस हो जाएगी. पुअर ग्रेड्स डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स. चेंजेस इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स. हाइपर एक्टिविटी, फ्रिक्वेंट टेम्पर ट्रांसट्रम्स. In older children and pre-adolescents, substance use, inability to cope with problem and daily activities, changes in sleeping and eating, excessive complaint of physical alignments, changes in ability to manage responsibilities at home and school, prolonged negative mood often accompanied by poor appetite or through of death. In adults, young adults, confused thinking, prolonged depression, feeling of extreme high and low, excessive fear and anxiety, social withdrawal, dramatic changes in eating and sleeping habits, a strong feeling of anger, strong thoughts, delusions, seeing of hearing things that are not there, hallucination and suicidal thoughts. Nurses role in NMPH मेंटल हेल्थ सर्विसेज. यदि हम बात करें नर्सेज की जगह फार्मासिस्ट की, यहाँ हमको बात करनी है फार्मासिस्ट के रोल की. Understand the characteristics of mentally healthy persons and differentiate abnormal from normal behavior in the community. Identify, refer, follow up the mentally ill person in the community. Provide first aid during emergencies. Assist and coordinate the activities related to care of mentally ill in the community health center. Conduct mental health education to patients and their family members. Providing training to health workers in mental health care. Supervision and monitor the activities of health workers related mental health care. Participate in various therapies used in treating psychiatric patients. Assist medical officer and coordinate the progress activity related to NMHP. Organize and coordinate the rehabilitation activity for mentally ill the community. Thank you so much.